we will learn the sumif function in Excel beyond the limit. Okay, so this is the my table. This is the heading. This is table and this is the heading. You can use it. You will use it. This is simple drop down list from this one. List 1, 2, 3, 4, 5. That's all. Right. So first of all, we will create a range, a dynamic range. So dynamic range we will use index formula to create a dynamic range. So dynamic range. So dynamic range. For dynamic range, we have selected this range, entire range. For the row, we will keep it left blank. Column we will select based on this one, right? So this is our dynamic range. So Control Shift Enter. So it is an array formula, right? We cannot delete anything. So how we will use this range in sumif, right? So total sumif range, this one, and again criteria, this one, and we will choose the criteria of greater than 400. Press simple enter. So 400. See, just remove it, but it is working same like this one, right? So 400, 400, 400, 400. So total 400 is 1833, and it's giving me a right thing. So one thing is how to use sumif with the index range, right? It is a dynamic. So first of all, 499. 499 is here it is, right? And row number 3. So 400 this one, 400 this one, 400 this one, 400, 400 and 400. So 2642 and 2642. Correct, absolutely correct. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1 and 2. 980, 980. So it's working very perfectly. So we don't need this range, but giving me the very. It is also working like this one. Perfect. So this is the one example of sumif with dynamic range, right? Another one. So another one range is first range I created like array range, right? It is an array index range, and this is sumif. Now I will create the same range with reference range, right? Reference range. How to create a reference range? Reference range. So first of all, we will using the same formula, right? If you notice that index has a two formula. One is for array, second one is for reference. Reference, row number, column number, and area number, right? So we will use this one, this second number type this time. So first range, comma, second range, comma, third range, comma, fourth range, comma, right? We will keep all these things in parentheses. This one. So first we will left, row number left, then column number is left, then area number. Area number we will choose this one. Area num, right? F2, F4, close. So just copy and paste here. Now I will use this is for as a sum range.
So sum if this one comma this one greater than 400 rows. So this is total. Now check this one. Are working very nicely or not working? So 400. Wait a minute. I just go to the conditional formatting here. One more thing I just tell you. Control 1. Press Control 1. Okay. Then go to custom. Then go to here is choose 400. Right. 0. Press 0. And you can use Windows and period sign to open Windows and period sign is okay. Here any symbol. Yes, correct. Okay, right. And press column. You can also use equals to here and less than 400. Again parenthesis, curly square bracket, Windows period, long, close, 0. That is working or not working? Not working. Okay. So it will be a green. Put it here. It will be red and put it here. Enter. So you will get this, right? Format, paste, save. So all the value from greater than 400 will be in green color and remaining are in red color. So tell me, this is another one. Is it correct? 1, 2, 3, 4. Total is 1833. Perfect. 3. Yes, perfect. 4. That is perfect. So this is another things we can do this index formula, right? This is the reference based formula. This is an array based formula, right? Both are working quite nicely. Okay. Now this both formula are using index for new text, right? This is array. Now I am using offset. Okay. So first of all we will make dynamic things. So choose alpha, right? So ब्राउन कलर दे देते हैं यहाँ पर. इंडेक्स नेक्स्ट जस्ट चूज कर लेते हैं इसको. कॉलम वाइज चूज कर लिया है मैंने. जस्ट कर लेते हैं आगे. परफेक्ट. नाउ क्रिएट अ रेंज. रेंज बना देते हैं. तो रेंजेस ऑफसेट. सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. रोज लीव इट ब्लैंक. मैच, हमने मैच का फॉर्मूला लगा दिया. इसको मैच करेगा. किसमें मैच करेगा? इसमें मैच करेगा. कहाँ से? 0 से. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से मैच सेलेक्ट किया और F9 प्रेस करिए तो आएगी 2. ऑफसेट पे जो रेंज होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. 0 1 तो यहाँ पर आ रहा है 2.
हमें 2 नहीं चाहिए, इसलिए हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पर -1। देन हाइट, अब हमें हाइट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो पूरी रेंज ही खेच ली ना 2 से लेकर 16 तक, तो हमें हाइट की जरूरत नहीं है। लेकिन विड्थ की चाहिए हमें एक सिंगल कॉलम की विड्थ चाहिए। ये 2 कॉलम दूंगा, 2 कॉलम की 3 4 सिंगल कॉलम विड्थ चाहिए। ये हो गया, ये बन गई हमारी ऑफसेट रेंज, राइट। अगर ए सेलेक्ट किया तो ए वाली रेंज आ जाएगी, बी सेलेक्ट किया तो बी वाली रेंज आ जाएगी, सी सेलेक्ट किया तो सी वाली, एंड सिमिलरली डी वाली, राइट। इस फॉर्मेट पेंटर को 2 बार क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाता है इस तरीके से, तो आप इसको लॉक कर दीजिए। और कहीं लेके जाना है तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। अनलॉक करने के लिए इसका बटन दबा दीजिए, 2 बार प्रेस करें, एक बार करेंगे तो आप एक ही सिंगल पेंट एक बार यूज कर सकते हैं, इसको फिर बंद हो जाता है। लेकिन डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर लॉक हो जाता है, ठीक है। अभी भी जाएगा ऐसे, स्केप दबाइए, बंद करिए, डी। सो वी विल गेट द टोटल। देख लीजिए कैसे कर सकते हैं इसको, ऑफसेट। सो समिफ रेंज ब्रैकेट ग्रेटर देन 400 दीजिए, 980 आ गया, परफेक्ट। तो बी की रेंज में कितना आ रहा है, बी है सेकंड कॉलम की, तो 1833 बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है, राइट। Okay, so this is an offset. We have used offset formula. Right. Now again the same formula we will use for index. So index, select all, row हमें नहीं चाहिए, column चाहिए match, lock, range, lock, 0. This is an error. This is the formula, right? So we can choose this one. Same formula we are using for index 2. So sum of this one, again this one, and greater than 400. So 980, perfect. So this is again this formula. We are using this one. It's working absolutely fine, no problem at all, right. Again we will use, offset. Just double click, paste. Right one. So we will hide this heading, Ctrl+0, column hidden, right. So this is the one way. Another one is offset, but in a different way. So offset, press F4, row, we will take 0, because row and column started from offset formula is from 0. So 0 and 0, but the height is this one, entire one to this one. So height is, what is our height? Take this to this. This is a 15 row. What is this? 15 row, right? So we will write it here, 15 row, and column will be this one. Right. What the catch is this? We will use a match here.
P2, this one, select this one, then 0, but it will give me a 1, sorry 4, so 0 1, sorry 1 2 3 4, but we will let 0 1 2 3, so take -1 here and enter. That's it. Use it. Right. Format close. Sumif. We can use it. Sumif. Comma greater than 400, and the value is 499. Check. Perfectly working. Right. This is another way to use of offset. So now again, how do we get the running total of this running total, right? This plus this and this plus this plus the running total. How do we get the running total? So first of all, we will get running total file this way, right? Semicolon. First cell should be logged, and second should not be logged, and greater than 0, right? C2, no, C2, no, C3, and C3. So it will give you a running total. This one, this. So this plus this 377. So by this way, total sum is 3796. It is a running total, right? We can use it as running total by this way. So if you want to make it dynamic, how will you do this? You just decide. Just decide yourself how we can make it dynamic. Okay. Second thing. Okay. अगर हमें इसमें से वो सारी वैल्यूज फिल्टर आउट करके यहाँ लानी है जो 400 से ऊपर है, और जो रिमेनिंग जो वैल्यू है जो 400 से नीचे है वो सब 0 हो जाए, वो सारी वैल्यूज 0 आ जाए, और जो 400 से वैल्यू ऊपर है वो ही यहाँ पर फिल्टर आउट होकर आ जाए. तो हाउ वी कैन डू दिस? ओके, I will tell you how we can do this. So basic formula is sumif, this one, log this one, comma, this, again press this one and this one. Now greater than 400. It is true? No, it is not true. It will give you 0 value. Run it and get it. So this is the way you can get the, what you get? You get the 0 value against the, which is value which is less than the 400. You will get a 0, and the value which is greater than 400, you will get the value, right? So this is the formula. Again, if you want to make a conditional formatting for this, just copy this formula, because this formula is giving me a 0, so it's work very nicely. So conditional formatting, new rules, formula, paste it here, font, no, I will go for this one. Okay, leave it here. This one. So we will get the values in green color.
So we will get in the value in a green color, which is greater than 400. You can use it simple formula also, like this one. If the value is greater than 400, it will give you a true and false conditions. This one, and you can copy this formula, remove it, clear, again conditional formatting, new, paste it here, fill, green color. So again, you can do either of these methods, like this one and this one, right? Now you want to make it dynamic, na? So I will tell you how to make it dynamic. So we are making it dynamic condition, na? So first of all, this is the formula, same formula, offset v2, रो इज 0, मैच हमने ले लिया था, यहाँ से ये कर लिया था, और यहाँ पर रो हमने डाल दी 15, क्योंकि हाइट डाल दी 15, तो हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा कट पेस्ट कर लेते हैं, इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें हाइट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो उसकी जगह हम लिख देते हैं रो -1, ये जो रो देगा वो तो देगा तीसरा, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो हमें -1 करना पड़ेगा। ऑफसेट आ गया। अब देख लेते हैं, ये सी कैटेगरी में 262 से आ रहा है, करेक्ट है, 262 है सी, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर रिमूव कर दें तो सी भी आ जाता है, राइट। सो डायनेमिक, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे रनिंग टोटल, राइट। सो समिफ कॉमा ग्रेटर देन 0, ये लीजिए, ये बन गया हमारा रनिंग टोटल। अब देख लीजिए सी कॉलम की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 4842, परफेक्ट। अगर 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 6867, परफेक्ट। तो हम यहाँ से चेंज करेंगे ए को, तो इट इज डायनामिक, राइट। बी का ये हो गया डायनामिक, इसको अगर आप चाहो तो ऐसा कर लो, ऐसे क्या जरूरत है, राइट। सी को this one and D this one, so it is a dynamic formula, right. It will give you a first, right. So this is the lot of things you can do with sumif formula, okay. चलिए सबसे पहले अब दिखाते हैं आपको समिफ्स का फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बनाने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि इसका रनिंग टोटल 2500 से जैसे ऊपर हो, ये इसकी वैल्यू को लेना बंद कर दे, राइट। तो हम लोग हमने पहले किया था, हमने रनिंग टोटल का फॉर्मूला लिखा था, तो हमने ये कर दिया था यहाँ पर B3, ऐसे लॉक कर दो उसको, इसको कॉपी कर लो और पेस्ट एंड राइट। ये हमने इस तरीके से किया था, और जैसे ही वैल्यू 2500 से ऊपर हो उसी तरीके से ये एरर दे दे। सो इज ग्रेटर देन 200, सो इट इज अ फॉल्स। ये फॉल्स नहीं, ये ट्रू है, यहाँ पर ट्रू हो गया। लेकिन हमें 2500 से ऊपर होने के ऊपर 2500 जैसे रनिंग टोटल ऊपर हो तो वैल्यू रोक दे, राइट। तो हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा ना, तो हमें यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा, सब कर दीजिए। तो 2500 से नीचे रहेंगी तो ट्रू रहेगा, और 2500 से जैसे ऊपर हुई तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होते ही डेटा वैलिडेशन इसको करने नहीं देगा एंट्री। तो डेटा वैलिडेशन जब तो ट्रू रहता है तो वो करने देता है, जैसे ही फॉल्स हुआ वो करने नहीं देता। तो हम लोग ये डाल देंगे, इसमें पेस्ट मार दिए, लिख देंगे entered value is exceeded 200,
राइट, एरर कर दीजिए। अब देख लेते हैं, यहां तक तो हमने वैल्यू एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दिया, ये लीजिए। अब जैसे ही इस यहाँ पर 200 रुपये लिखता हूँ, ये बोलते हैं एरर, राइट। ऐसे मैंने गड़बड़ कर दिया इसको, राइट। इसकी जगह हमें ये लिखना चाहिए था, जो हो गया। जैसे ही मैं यहाँ 150 रुपये लिखूंगा, ये बोलेगा एंटर्ड वैल्यू इज एक्सीडेड थ्रू 200, और ये इसको एंट्री करने दे रहा है। क्यों करने दे रहा है एंट्री? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या शो अलर्ट, इसका डाला स्टॉप करना है। कैंसिल करते ही हटा देगा, ट्राई करते ही ये ऐसा आ जाएगा, कैंसिल 0। सो जैसे ही वैल्यू इसकी यहाँ वैल्यू जैसी ऊपर हुई 2000 से ऊपर वैल्यू हुई, तो ये डेटा वैलिडेशन लगा देगा। वैलिडेशन रनिंग टोटल, रनिंग टोटल, परफेक्ट। इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं इसमें। हमने इसमें यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला क्या लगाया है, ये फॉर्मूला लगाया है, राइट। So that's all for now. Rest we will catch you later.